और आप इसने इसकी शुरुआत की थी। तो बहुत पुराना प्रोफेशन है, लेकिन मॉडर्न टाइम्स में इसकी शुरुआत जो है ग्रेट ब्रिटेन से हुई, यूके से हुई। 1939 के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो बहुत सारे सोल्जर्स इंजर्ड हुए, हैंडीकैप हो गए। तो ये महसूस किया गया कि फिजियोथेरेपी की जरूरत है, जिससे कि इनको चलने फिरने लायक, इनको अपने काम लायक या इनको अपने इंडिपेंडेंट फिजिकली बनाया जा सके। तो फिर फिजियोथेरेपी का एक मॉडर्न, आप ये कह सकते हैं कि जो मॉडर्न इनकारनेशन है, दैट हैपेंड ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नाउ फिजियोथेरेपी को फिजिकल थेरेपी भी कहते हैं। यूएस, कनाडा इधर साइड फिजिकल थेरेपी ज्यादा कहते हैं, और यूके और इंडिया साइड इधर फिजियोथेरेपी कहते हैं। हिंदी में भौतिक चिकित्सा भी कहते हैं। तो फिजियोथेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी इज ए हेल्थ प्रोफेशन concerned with assessment, diagnosis and treatment of diseases, disabilities and injuries through physical means agents. फिजियोथेरेपी एक हेल्थ प्रोफेशन है जो खुद असेसमेंट करता है, डायग्नोस करता है और अपनी फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट की प्लानिंग करता है, जिससे कि डिजीजेस, डिसेबिलिटीज और इंजरीज को ठीक किया जा सके। और वो ठीक करने में अपने ही साधन, यानी जो भौतिक साधन है, फिजिकल एजेंट्स हैं, फिजिकल मीन्स हैं, उनका ही प्रयोग किया जाता है। सो इट इज इन क्वाइट कंट्रास्ट टू मेडिसिन्स, वेयर medicines are to be taken, are consumed. Here it is all topical treatment, all outside treatment, and patient is treated in a physiotherapeutic way. Now physiotherapy या physical therapy, it is abbreviated as PT, and it is very, you can say, upcoming growing profession. It is concerned with identifying and maximizing quality of life. So प्लेयर के लिए तो हम उसकी एबिलिटी को, खेलने की एबिलिटी को, क्षमता को हम इम्प्रूव करते हैं, लेकिन जो आम व्यक्ति है उसके लिए हम उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। जो आम व्यक्ति है, अगर वो हैंडीकैप हो गया, इंजर्ड हो गया, तो वो बेसिक चीजों के लिए ठीक होना चाहता है। वो चाहता है कि मैं चलने लायक बन जाऊं, मैं अपना काम, ऑफिस जाने लायक बन जाऊं, मैं अपना घर का काम कर सकूं। कोई हाउसवाइफ है, वो कहती मैं अपना घर का काम कर सकूं। तो ये जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको ये इनहांस करता है, और सब तरह से पेशेंट का वेलबीइंग किया जाता है। फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल, सोशल, हर तरह से पेशेंट को, मतलब जो है पेशेंट का जो रिहेबिलिटेशन है वो करने का प्रयास किया जाता है। तो इट इज कंसर्न्ड विद आइडेंटिफाइंग एंड मैक्सिमाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ and movement potential within the spheres of promotion, prevention, diagnosis, treatment, intervention, habilitation and rehabilitation. This encompasses physical, psychological, emotional and social well-being. So all round well-being of the patient is ensured through physiotherapeutic way. Now how it works? Physiotherapy helps the patients restore the use of muscles, bones and nervous system through the use of physical means, agents which are governed by the laws of physics. Now how the patients are helped? Patients are helped by employing physical means. These physical means are physical agents, and these physical agents are follow the laws of physics. They are governed by the laws of physics. बहुत सारी ऐसे फिजिक्स में जो चीजें हम पढ़ते हैं वो सारी चीजों के ऊपर आधारित जो बिजली से संचालित होने वाले उपकरण हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल करंट्स हैं, मैग्नेट्स हैं,
जिसमें आप ये कह सकते हैं रेज हैं, लाइट है, साउंड है, इन सब पे बहुत सारे संचालित उपकरण हैं। उन उपकरणों का प्रयोग किया जाता है और इनके जरिए पेशेंट को ठीक करने की कोशिश की जाती है। जो बहुत सारे उपकरणों के नाम, जैसे करंट की मशीनें हैं, IFT है, टेंस है, शॉर्टवेव डायथर्मी, माइक्रोवेव डायथर्मी, वैक्स बाथ, पैराफिन वैक्स बाथ, लेजर, थर्मोथेरेपी, क्रायोथेरेपी, मसाज, अल्ट्रासाउंड, रिहैब एटसेट्रा, सभी कहीं न कहीं एक तरह से फिजिकल मीन्स हैं, एक तरह से फिजिक्स के लॉज के आधारित उपकरण हैं। इन उपकरणों के ऊपर हम आधारित उपकरणों से हम ट्रीटमेंट करने का प्रयास करते हैं। ना फिजियोथेरेपी में हम क्या हासिल करने की कोशिश करते हैं? हाउ in what way we try to provide relief to the patient? Physiotherapy seeks to relieve pain, decrease stiffness, increase strength and mobility, increase mobility, strength and train patients to perform day-to-day tasks with ease. जो day-to-day task है, चाहे आम आदमी हो और चाहे खिलाड़ी हो, खिलाड़ी का भी day-to-day task क्या है? उसको ट्रेनिंग करना है, उसको खेलने लायक बने रहना है, उसको अपने स्पोर्ट्स में प्रोडक्टिव रहना है। तो ये सब कैसे पॉसिबल होगा? जब तक कि इंजरी की वजह से उसको है, उसकी स्टिफनेस है, उसका मसल स्पैज्म है, वीकनेस है, उसकी लैक ऑफ मोशन है, बहुत सारी चीजों को जब तक हम एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक ठीक नहीं करेंगे, तो पेशेंट खेलने लायक नहीं रहेगा। Now, physiotherapists working in sports try to help on all above accounts and tries to improve the performance by treating their injuries. So, physiotherapy is very much of help to the injured sportsman. Now, what is the need of physiotherapy? फिजियोथेरेपी की जरूरत इतनी क्यों है? बहुत सारी चीजें हैं ठीक करने के लिए, बहुत सारी चीजें हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। हम दवाइयां भी लेते हैं, जरूरत पड़ती तो सर्जरी भी कराते हैं। तो फिजियोथेरेपी भी एक पेशेंट को ठीक करने का तरीका है। फिजियोथेरेपी का अपना ढंग है। ये एक तरह से नॉन ऑपरेटिव, नॉन सर्जिकल, कंजर्वेटिव मेथड है और नॉन मेडिसिनल भी है। इसमें कोई हम मेडिसिन या दवा गोली कुछ नहीं देते हैं। तो क्या जरूरत क्या है फिजियोथेरेपी की? नीड ऑफ फिजियोथेरेपी इज क्वाइट इमेंस in the treatment of injuries as well as diseases. बहुत बड़ी जरूरत है और इस जरूरत को फिजियोथेरेपी पूरा करने का प्रयास करती है। Most of the time it is employed along with medical and surgical treatments. बहुत दफे मेडिकल मैनेजमेंट के साथ साथ फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट भी होता है। कई दफे मेडिकल सर्जिकल के साथ फिजियोथेरेपी होता है, कई दफे पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट के तौर पे फिजियोथेरेपी का इस्तेमाल होता है। तो फिजियोथेरेपी की जरूरत बहुत है, अहमियत बहुत है फिजियोथेरेपी की। इन वास्ट नंबर ऑफ कंडीशंस फिजियोथेरेपी इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। बहुत सारी जगह ऐसा है कि उसकी जल्दी सर्जरी नहीं हो सकती या सर्जरी करना ठीक नहीं है, मेडिसिन के लिमिटेड स्कोप है। तो ज्यादातर केसेस में आराम जो है, रिलीफ जो है प्लेयर को या प्लेयर के अलावा आम आदमी को, आम पेशेंट को हम जो है फिजियोथेरेपी से आराम देने की कोशिश करते हैं। देयर फिजियोथेरेपी इज ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बिकॉज नीदर सर्जरी नॉर मेडिसिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम could be of any help, could afford any relief to the patient. Now, exercises being the integral part of physiotherapy. जो exercises हैं वो rehabilitation में इस्तेमाल होती हैं, therapeutic exercises होती हैं. They are grossly looking similar to the exercises
which you do during your training, but they are intended with a different purpose, to rehabilitate the injured athlete and put him back on the rails and road to recovery. So as they bring fitness, these exercises bring back fitness to the athlete, improve their sports performance, and thus are akin to the rehabilitation of injuries and diseases as well. So physiotherapist सभी को ठीक करता है, इंजर्ड स्पोर्ट्समैन को भी करता है और डिजीज्ड पेशेंट्स को भी करता है. नाउ फिजियोथेरेपी कैसे काम करती है? फिजियोथेरेपी के बहुत सारे मेथड्स हैं. पहला इलेक्ट्रोथेरेपी, दूसरा हाइड्रोथेरेपी, तीसरा एक्सरसाइज थेरेपी, चौथा मैनुअल थेरेपी. इलेक्ट्रोथेरेपी में सब बिजली से संचालित होने वाले उपकरण आ जाते हैं. हाइड्रोथेरेपी में जहां पानी एक वाटर इज ए मीडियम टू ट्रीटमेंट फॉर ट्रीटमेंट, पानी एक आधार है, बहुत सारे पानी तीनों फॉर्म में मिलता है, यूज किया जाता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म में. लिक्विड फॉर्म में पानी जो है चिल्ड वाटर, कोल्ड वाटर, हॉट वाटर इस तरह से यूज कर सकते हैं. सॉलिड फॉर्म में आइस का हम इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा जो है एज ए फर्स्ट एड, और गैसियस फॉर्म में स्टीम बाथ, ये सब इस्तेमाल होता है. तो पानी की जो तीनों स्टेट्स की जो तीनों अवस्थाएं हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तीनों फॉर्म में पानी जो है यूज किया जाता है. एंड इट इज integral part of, and it is the medium, you can say, behind the hydrotherapy treatment. Now exercise therapy. exercise therapy में जैसे मैंने बताया therapeutic exercises प्लान होती हैं. ये therapeutic exercises के जरिए हम फिटनेस को वापस लाने का प्रयास करते हैं. तो ये बहुत एक अच्छा ट्रीटमेंट का माध्यम है, क्योंकि प्लेयर सिर्फ इंजर्ड ही नहीं होता है, प्लेयर अपनी फिटनेस को भी खो देता है, और फिटनेस को दोबारा हासिल करने के लिए हमें एक्सरसाइज थेरेपी की जरूरत पड़ती है. और एक चीज है जो मैनुअल थेरेपी है. मैनुअल थेरेपी मींस हैंड्स ऑन ट्रीटमेंट, वेयर फिजियोथेरेपिस्ट ट्राइज टू रिलीव द पेन, सफरिंग, as well as there are many conditions which respond to these manual application, manual mode of physiotherapeutic application. So ये चार तरीके हैं. They are the pillars of physiotherapy. They are foundations of physiotherapy. You can say they are branches of physiotherapy in a way that make the physiotherapy all about. Now coming on to there are various machines and modalities. So I'm going to just elaborate upon briefly. इलेक्ट्रोथेरेपी में अल्ट्रासाउंड, जो साउंड वेव के सिद्धांत पे काम करती है, वह बहुत तरह के करंट्स हैं, बिजली के इलेक्ट्रिकल करंट्स हैं, जिनको हम मॉडिफाई करके, चेंज करके, उनको लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, मीडियम फ्रीक्वेंसी, सब तरह से बना करके हम उनको यूज करते हैं. इंटरफेरेंशियल रशियन करंट्स हैं, टेंस है, ट्रांसक्यूटेनियस नर्व स्टिमुलेशन, लेजर है, लाइटें हैं, रेज हैं, इंफ्रारेड लाइट लैंप, अल्ट्रावायलेट लैंप, वैक्स बाथ, पैराफिन वैक्स is quite useful to the athlete. So there is a paraffin wax also, wax bath treatment also in physiotherapy. Then there are diathermies, short wave diathermy, long wave diathermy, microwave diathermy, and so on. So there are so many treatments. It is not just a elaborate exhaustive list, but I am just giving you some example of the common physiotherapy, electrophysiotherapeutic modalities used in physiotherapy. Now in hydrotherapy, you can say there is a cryotherapy, there is a thermotherapy, and there is a mixture of cryo and thermo known as contrast bath therapy, cold and hot treatment. Contrast bath, cold and hot. Cryotherapy, cold treatment. Ice massage. In thermotherapy, there is a whirlpool bath, warm hydrocollector heating unit. So many treatments are there in hydrotherapy, just to name a few. Exercise therapy, we use different kinds of rehabilitative exercises.
to increase the fitness of the athlete. For that, we need strengthening exercises, mobilizing exercises, stretching exercises, balance improving exercises, agility improving exercises, coordination exercises. So many exercises are employed depending upon their requirement to the patient. Now, in manual therapy, so many manual therapy techniques are there: massage, mobilization, manipulation, assisted exercises, manual resisted exercises. So many specialized techniques are there to be used in manual therapy. This is a transcutaneous nerve stimulator. Like so many machines are there in physiotherapy. So I have just put one picture of it. Now, coming on to the branches of physiotherapy. Physiotherapy, as I have told you, it is a fast upcoming field. So it is slowly diversifying into different branches. This is again not an exhaustive list, because every day something new is happening. So we are concerned about sports physiotherapy. Sports physiotherapy deals with the concerns and problems of a sportsman. Orthopedics physiotherapy, musculoskeletal physiotherapy, both are same. Both are dealing with the muscles and bones. So it is again a very important branch of physiotherapy. In sports physiotherapy, we are dealing mainly with soft tissue. In orthopedic physiotherapy, so many diseases are there: bone diseases, bony injuries, fractures, and all that. So physiotherapists working in specializing in orthopedics are dealing with all those bone conditions, bone diseases. Beside that, trauma in the form of fracture, dislocation, and post-surgical management of patients. Now, in musculoskeletal physiotherapy, it is more or less like orthopedics, as I told you. Muscles and bones, both are the areas of concern. In cardiopulmonary physiotherapy or cardiothoracic physiotherapy, heart and lungs, problems afflicting heart and lungs are dealt with. And physiotherapists who are there, they are working right from intensive care up till the patient is discharged. So cardiopulmonary physiotherapy is very specialized and quite a different field. Now, neurophysiotherapy. The neurophysiotherapy, the physiotherapists working in neurology, they are trying to provide relief to all those paralyzed patients who are having weaknesses, muscle weaknesses because of some nerve problems, nerve injuries, diseases of nervous system. So they are more disabled, they are more bed bound, they are more crippled in a way, in a sense. So physiotherapist plays very important role, and sometimes in such conditions, medicines are generally not very much helpful. So physiotherapists, lot of onus lies on the shoulder of physiotherapy. Now, pediatric physiotherapy. What is pediatric physiotherapy? In pediatric physiotherapy, we are dealing with the problems of infants, children, and there are so many conditions afflicting children, and physiotherapist is working to treat all these things. Now, there are so many. Next is geriatric physiotherapy. In geriatric physiotherapy, old problems concerning old people, senior citizens, their problems are addressed. In old days, as you know, a lot of problems are occurring, like joint diseases, like muscle weakness, like locomotor problems, ambulation problems, balance problems. So many problems are there afflicting our older population. So physiotherapy is now coming to the rescue in the form of geriatric physiotherapy. Now, gynecology and obstetric physiotherapy, women health. Physiotherapists are working in women health. The pregnant woman, right from antenatal to postnatal period, physiotherapists
are working, and they are trying to provide their services to women pregnant as well as recently who have achieved, who have become mothers recently. So physiotherapy is very widely used in different branches of medicine and surgery, and it is just to name a few, and it is not an exhaustive list. Again, I have told you. There are many skin diseases in which physiotherapists are working, dermatology, skin conditions. So it is not exhaustive. Now, what is the sports physiotherapy? Sports physiotherapy is a specialized branch of physiotherapy which deals with injuries and issues related to sports people. स्पोर्ट्समैन से जुड़ी हुई समस्याओं का हम हल करते हैं। और स्पोर्ट्समैन की सबसे बड़ी समस्या है जिसके लिए वो हमारे पास आता है, वो है इंजरी। वो कहता है सब मुझे चोट लग गई है, मैं काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं खेल नहीं पा रहा हूं, मैं अपना गेम नहीं कर पा रहा हूं, और इसलिए फिजियोथेरेपिस्ट जो है फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प ली जाती है जिससे कि उसकी इंजरी का मैनेजमेंट किया जा सके उसका, और अगर पहले चोट लगने के पहले मिला जाता है तो फिजियोथेरेपिस्ट उसको प्रिवेंट करने की भी कोशिश करता है। Now, what is the role? What is the role of physiotherapy? What is the role of physiotherapy? There are various roles to the physiotherapists working with teams. To name a few, grossly looking, if you're working with a team, now you have to outreach. You have to reach out to your sportsmen, to your players. If you're with the team, it's your job to ask for their any problems. Are they having any problems? Is there anything that is hurting them, hurting their training, or affecting their training? Are they are how is their performance? They will definitely say something. It's okay. They will say it's okay. If not okay, then you try to find out what is not right with them. So all these things is very, very essential. Once you are with team, you have to provide outreach in the sport. Then prevention. If you're with the team, your job is also to ensure that minimal incidences of injuries do take place in that particular game, because you are the person who is well versed with the how the injuries take place and what to do, how to avoid these injuries from happening. And that is only possible if you are taking few educational lectures in which coaches are there, in which players are there, and you are trying to educate them about various preventive measures. So, बहुत जरूरी चीज है ये कि जहां पे आप प्रिवेंशन के बारे में डिस्कस करें, चीज को चोटों को होने ही ना दें या कम से कम होने दें। चोटों को पूरी तरह तो प्रिवेंट करना मुश्किल है, लेकिन कम से कम जानकारी से बहुत कुछ बचाव संभव है। नाउ रिकवरी, you have to ensure recovery of your athletes. For that, you have to make a schedule of their steam bath, sauna bath, massage sessions and all that. So recovery is very, very crucial. You have to have all these things and make sure that they undergo recovery sessions. Rehabilitation, once the injury takes place, put him under rehabilitation. Well supervised rehabilitation program. They do it sincerely and religiously without any fail, because
this rehabilitation will bring them back to the fitness, on the rails of fitness, and they will put back again to resume game without any problem. Now, teaching. As a team member, you are important team member, so you have to teach, you have to educate, whereas how to prevent injuries, doping related issues, hygiene related issues, so many things that are needed to be discussed in team meetings, and that is how a physiotherapist gives his contribution. Now, research, you have to have a research mind also. What is causing injuries? Make profile of the athletes, and at the same time, if there is something new which you feel that it is to be further researched, that area physiotherapists are working in that direction also. So these are in brief the roles of physiotherapy, where we have a preventive role, we have a recovery role, we have rehabilitation role, we have a educational teaching role, research role, and we have to reach out to a sportsman after all, because if we won't reach out, nobody is going to tell you about their problem, because players generally come quite late and they keep ignoring their injuries. Now, as I've told you, what happens? Injuries are part and parcel of, and what happens when their injury takes place? A sports injury causes pain, swelling, and tenderness. Tenderness means pain and touch. Now, this pain leads to limited use of that injured area. दर्द होगा तो उस जगह का इस्तेमाल नहीं होगा, इस्तेमाल नहीं होगा तो लिमिटेड यूज की वजह से फिर वहां मसल वीक हो जाएगी, मसल्स इनफ्लेक्सिबल हो जाएंगी, मसल्स के काम करने की क्षमता, इंड्योरेंस कम हो जाएगा और बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो ये चोट लगने के बाद ये सारी दिक्कतें आती हैं और फिजियोथेरेपिस्ट इन्हीं को एड्रेस करता है, इन्हीं सारी चीजों को, कि उसको पता है कि चोट लगी है तो ये सारी दिक्कतें आएंगी। ओवरऑल फिटनेस का लेवल प्लेयर का कम हो जाता है। तो प्लेयर का फिटनेस लेवल कम ना हो और वो प्लेयर पहले की तरह से अपना गेम खेलने लायक बना रहे। अगर आम आदमी है, आम पेशेंट है, तो वो पहले अपनी ड्यूटी और जॉब जाने लायक बना रहे। बिकॉज फिजियोथेरेपी तो सभी को, ये जनरल आपको मैं रोल इसमें बता रहा हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट तो सभी के लिए काम करता है और स्पोर्ट्समैन के लिए भी करता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोथेरेपी इन जनरल? नाउ द अल्टीमेट एम ऑफ फिजियोथेरेपी इज द रेस्टोरेशन of the fullest functional activity possible. There are some common principles implied in management of patients, athletes in general. Now we are going to deal with all these things. Circulation. First point is circulation. Circulation and tissue interfluid interchange must be maintained or increased. सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब चोट लगती है सर्कुलेशन अफेक्ट हो जाता है। सर्कुलेशन अफेक्ट होने की वजह से, क्योंकि एक्टिविटी का लेवल कम हो जाता है, तो ब्लड फ्लो बहुत जरूरी चीज है। अगर हीलिंग को होना है तो ब्लड फ्लो कम ना होने पाए या ब्लड फ्लो उतना बना रहे उस रीजन में, इसके लिए हम जो है जो भी प्रयास करते हैं तो उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। आइस लगाते हैं शुरू में तो भी उससे भी ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जो है कोई मोडलिटी लगाते हैं, कोई फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी की मोडलिटी लगाते हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। कोई एक्सरसाइज थेरेपी कराते हैं, उससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो हर चीज से ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन कम ना होने पाए, और अगर कम हो गया है तो इसको बढ़ाया जाए और इसको बरकरार रखा जाए, जिससे कि मतलब हीलिंग हो सके। कई दफे ऐसा देखा गया है कि हीलिंग जो है होने में देरी होती है, क्योंकि वहां पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत कम होता है। बहुत सारे ऐसे फ्रैक्चर हैं जो हीलिंग की वजह से, सर्कुलेशन की वजह से हील नहीं कर पाते। तो सर्कुलेशन इज very important, and all kinds of circulation gets affected, be it arterial, venous, lymphatic, capillary, all sorts of circulation gets affected by the physiotherapeutic modalities. Now, joint mobility also gets affected because of the injury.
So our concern is to maintain the range of motion, and if it somehow, because of the inflammation in that region, if there is some difficulty in moving or there is some restriction in joint range of motion, so we try to increase the mobility to the fullest extent possible, and any diminution in the range should be addressed. Otherwise joint deformities and contractures may take place. नहीं करेंगे तो जोड़ खराब हो जाएगा, जोड़ जाम हो जाता है। तो ये जोड़ जाम ना होने पाए, इसलिए जो है हमें जॉइंट की मोबिलिटी को मेंटेन रखना है, और अगर कम हो गया तो उसको बढ़ाना है। ना चूंकि अब चोट लगी है, कोई मसल में हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन है, क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेन है, काफ स्ट्रेन है, कोई भी इंजरी है, तो मसल पावर भी कम हो जाती है, क्योंकि वो मसल प्रॉपरली काम नहीं कर पाती है। तो काम ना करने की वजह से मसल में वीकनेस आ जाती है। तो हम कोशिश ये करें कि मसल की वीकनेस ना आने पाए, मसल की क्षमता को बरकरार रखें, और धीरे धीरे जैसे जैसे चोट ठीक हो रही है, मसल की क्षमता को पहले वाले स्तर पे ले जाएं, क्योंकि अब वो इंजरी के बाद वो मसल वाली की क्षमता जो है, कार्य करने की क्षमता, कंट्रैक्शन एबिलिटी, उसकी पहले वाले स्तर पे नहीं है। तो इसके लिए हमें तरह तरह की स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस कराने की जरूरत पड़ेगी, एक्टिव, पैसिव, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी हमें, जिससे कि मसल की स्ट्रेंथ को हम मेंटेन रख सकें और फर्दर बढ़ा भी सकें। कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस, एज द प्लेयर इज because of the injury, what happens? Player is not able to play his game. His training has been hampered. Training is affected. Now this may lead to the decrease in his heart's pumping capacity of blood to the body, and one's breathing capacity. जल्दी सांस चढ़ जाता है, जल्दी थक जाता है प्लेयर। तो ये पॉसिबल है क्योंकि ट्रेनिंग अफेक्टेड हो गई है। तो प्लेयर, और ये जरूरी है कि प्लेयर कुछ समय तक नहीं अपनी ट्रेनिंग कर पाएगा। तो जब तक वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा है, तब तक जो है हमें पेशेंट की कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को मेंटेन रखने की जरूरत है, और उसके लिए हम बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पेशेंट बेड बाउंड है तो बैठे बैठे वो एक्सरसाइजेस, कुछ अपर लिम की अगर करने की स्थिति में है, लोअर लिम में चोट लगी है तो अपर लिम की एक्सरसाइजेस कर सकता है, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकता है, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकता है, कास्टल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकता है। साथ में वो कुछ बैठे बैठे अगर रिक्रिएशनल कुछ पॉसिबल है तो उसको गेम और उनके जरिए भी इंगेज किया जा सकता है। जो है अगर पेशेंट अपर लिम में चोट है तो लोअर लिम से चल फिर सकता है। तो कार्डियोथोरेसिक एरोबिक एक्सरसाइजेस, साइकिलिंग, हर चीज पॉसिबल है, स्विमिंग पॉसिबल है, जो कर सकता है जनरल एक्सरसाइजेस, जिसके जरिए वो कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस को अपने मेंटेन रख सकता है या उसको बढ़ा सकता है। जो है तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है ना। खाली यही करना जरूरी नहीं है। पेशेंट आपके पास आया कोई इंजरी लेके, कोई चोट लेके, कोई तकलीफ है उसको, तभी वो आपके पास आया, तो उसकी जो स्पेसिफिक कंप्लेंट्स हैं, स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, उनको भी एड्रेस करना हमारा एम है। ये सारे मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोथेरेपी बता रहा हूं, क्योंकि फिजियोथेरेपी जो है सभी को, इन सभी बिंदुओं को, सभी पॉइंट्स को फिजियोथेरेपी जो है एड्रेस करती है। यही हमारा एम भी है। सब कुछ आपने किया, लेकिन पेशेंट जिसके लिए आया, वो आया दर्द के लिए, उसको दर्द हुआ, उसकी ट्रेनिंग नहीं हो रही थी, उसको तकलीफ है, तो उसको भी एड्रेस करना बहुत जरूरी है। पेन, swelling, tenderness, difficulty in moving the part, injured part, all these areas of concerns. Now you have to ensure that these symptoms are addressed quickly. His pain subsides, his swelling subsides, he is again able to walk properly. So all these things
for all these things, he is right from first aid, providing first aid, to giving him electrotherapeutic modalities to reduce pain, swelling, etc. And again, putting him on rehabilitation so that he regain back his fitness. So all these things are essential to relieve his complaints, his specific issues. Now, complications. ये बहुत जरूरी है. चोट लग जाती है और चोट कॉम्प्लिकेट ना करे, ये हमें इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है. अगर चोट कॉम्प्लिकेट कर गई तो इस मीन्स कि कहीं ना कहीं या तो प्लेयर की नेग्लिजेंस है या कोच की नेग्लिजेंस है कि जो उस चोट के बाद भी उस प्लेयर से काम लिया, या काम ट्रेनिंग चल रही है या गेम चल रही है, या प्लेयर उसको हल्के से लेता है, जिससे कॉम्प्लिकेशंस होती जाती हैं. तो ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो, we are with the team. So at any point of time, we shouldn't allow the condition to deteriorate. If condition is deteriorating, it means we are culprits. We are responsible. And we should enforce all measures to prevent them. जो भी हमें चाहिए सब करें. We should speak to players, we should speak to coaches and tell them, if you continue to take work from your injured part, you are not going to get well soon. Your injury, which is in grade 1, might be more turn into more severe form of injury, maybe grade 2, grade 3, simply because of your persistence, simply because of your simply because you're not giving rest to that injured part, or simply you're not, as a coach, you're not asking your player to not to play the game till the injury is addressed. So all these things are essential to prevent complications, and we must discuss all these issues concerning player with the team management. Now, general health and fitness. When the player is, because of the injury, he is no longer able to play his game, his general health and fitness also gets affected. So we have to think the patient as a whole. We cannot say that player is just in terms of our view player in terms of just a knee case or ankle case or some other part which is affected. No, we have to have a complete view about the patient and ensure that his overall health, his general fitness doesn't get affected while the injury is healing. And we should, if it is anyway getting compromised, we should try to maintain or improve it. So, teaching the use and care of aids and appliances. There are various aids and appliances that are advised by physiotherapists, by sports medicine doctors, or other doctors working in different fields. If there are so many things like braces, like kneecaps, like ankle supports, like other protective
head gears, where chest guard, shin guard, so many things are there. How to use them? There are a lot of things because player doesn't know their importance. So initially you have to advise them how to correctly use them to safeguard from any injury. At the same time, various mobility aids which may be required while the patient is recovering from injury, like sticks, like elbow crutches, like auxiliary crutches, like walking frame, all these things may be required. And how to work, how to walk with assistance of these mobility aids, with a modified gait, with a modified walking, a physiotherapist needs to not only teach him how to use them effectively, but at the same time teach them how to walk in a modified way with the help of these aids and appliances. Now, to ensure recovery of athlete from fatigue, once again I have told you, you are with team, a physiotherapist who is with team, he has to ensure that his player doesn't get overtrained, doesn't get overtired, doesn't get over fatigued. If he gets over fatigued, a condition known as delayed onset muscle soreness develops. And this condition, if develops, the muscles become quite painful. Patient loses his sleep, loses his interest in training. There's a lot of stillness feeling. The next morning he is not fresh. He is not fresh to train. So you have to ensure recovery. Training is one part and recovery is another part. If you will keep on frequently recover the athlete, you may be able to take work from the player. So recovery is very, very essential. People undermine it. People say that players are, after all, human beings. They also get tired because of their hectic schedules. So at frequent intervals, fixed days and sessions, after certain fixed days or sessions, they are needed to be recovered. And recovery methods, as you know, relaxation, massage for relaxation, sauna bath, steam bath, good sleep, change from daily training. All these things are very helpful in providing rest and recovery to the athlete. If the player is not recovered from his previous day training, then there is more chances of getting injured in the next session. So don't force your player. Please don't force your player to play when he is not capable of playing. He is complaining of something and you are not heeding his voice. So just listen. So it is very essential, because player can be dubbed as an actor and you are the director as a coach. So you cannot. You have to listen. You have to remain very, very sensitive, because you are dealing with a sportsman who doesn't have knowledge of about sports medicine, sports physiotherapy. He doesn't know anything about all these things, but you are a trained, qualified person. You have basic idea. So just learn to listen to their problems, and in case they say something, give due importance. And the last point is to prevent sports injuries. Physiotherapist, this is one of the, again, one of the most important aim is we have to prevent the sports injuries. चोटें लगेंगी, ये जरूरी है, ये सत्य है, लेकिन कम से कम चोटें लगे, इसी के लिए हम सब प्रयास करते हैं. तो ये चोटें कम से कम कैसे लगेंगी, इसके लिए हमें प्लेयर से बात करना पड़ेगा. प्लेयर से जब हम बात करेंगे तो पता लगेगा कि वो ट्रेनिंग कैसे करता है, सेफ्टी गार्ड्स का इस्तेमाल करता नहीं करता है, रेस्ट लेता नहीं लेता है, बहुत सारे जो प्रिवेंटिव मेथड्स हैं
उनका वो मतलब करता है, फॉलो करता नहीं करता। तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमें बहुत प्लेयर को इंजरी प्रिवेंशन में मदद करेंगे। फिजियोथेरेपिस्ट का काम टीम के साथ, मैं एक बार फिर से जो एम्स एंड वो है एक बार आपको बता देता हूं, क्योंकि जो एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोथेरेपी, what are the main points? Circulation and tissue interfluid change must be maintained or increased. So सर्कुलेशन अगर कम है तो इसको बढ़ाने का प्रयास फिजियोथेरेपिस्ट करता है। फिजियोथेरेपी की यही कोशिश होती है कि सर्कुलेशन, टिश्यू इंटरफ्लूइड चेंज बना रहे, जिससे कि वहां स्वेलिंग और ये सब कुछ ना इकट्ठा होने पाए और प्लेयर सर्कुलेशन बने होने की वजह से उसकी इंजरी हील कर जाएगी जल्दी। Joint range of motion, joint mobility must be maintained, or if it has reduced because of the impact of injury, it should be increased. Muscle power must be maintained. If it has reduced because of the impact of trauma, impact of injury, a condition known as disuse muscle atrophy, where the muscle becomes weak because of lack of use or underuse or improper use. So muscle gets weak. So if it has become weak, we try to increase the muscle strength, muscle power, muscle endurance, and muscles working capacity with the help of various kinds of strengthening techniques. Now, cardiorespiratory endurance, the heart and lung fitness in layman's term, you can say, because our heart and lung is no longer working proper. So while sitting or while convalescing or while recovering from the injury, we must maintain the cardiorespiratory endurance. Specific symptoms, complaints of the player like pain, swelling, difficulty in performing or moving that injured part must be addressed with the help of various physiotherapeutic modalities. Exercises and electrotherapeutic modalities, hydrotherapy modalities are employed. Complications must be prevented. Don't take work from the injured part until its strength and fitness has become equal to the uninjured part. General health must be improved. ऐसा कुछ नहीं करें कि जनरल हेल्थ और फिटनेस भी साथ साथ सफर करे। तो जनरल एक तो फिटनेस को मेंटेन रखने का भी प्रोग्राम बना के रखना पड़ता है, जिससे कि प्लेयर जो है जनरल फिटनेस भी उसकी बनी रहे। टीचिंग ऑफ यूज एंड केयर ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस, अगर जरूरत है उसको स्टिक से चलने की, वॉकर से चलने की, या कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को कैसे यूज करना है, कैसे पहनना है, तो और कैसे मॉडिफाइड गेट को अगर कुछ सिखाना है, मॉडिफाइड वॉकिंग, कैसे स्टिक से कैसे वॉक करनी है, वॉकिंग फ्रेम से कैसे वॉक करनी है, गिरना भी नहीं है, ये सारी चीजों के साथ, क्योंकि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी तो पेशेंट गिर जाएगा जो है। तो ये सारी चीजें जब तक कि उसकी इंजरी ठीक नहीं होती है तो ये सब सिखाना जो है बहुत जरूरी है। Now we have to ensure recovery of athlete from fatigue. मसाज करवाइए, सोना बात करवाइए, स्टीम बात करवाइए, सभी चीजों की जरूरत पड़ेगी। एंड वी हैव टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरीज, क्योंकि स्पोर्ट्स इंजरी का प्रिवेंशन नहीं करेंगे, चोटें बार बार लगती रहेंगी, इट मींस कि हम कहीं गेम को समझते नहीं है, और इन चोटों से बचाव की अगर हमें नॉलेज होगी तो हम जल्दी इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजियोथेरेपी। I hope you would have understood, and in case if there is any problem, you can get your clarification in evening discussion class.